Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the implication of pole zero location on driving point function. This topic is meant for MSc Physics and Electronics students and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The JRF and NET aspirants will find this topic useful. The complete note of the topic is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. We have earlier seen that the network function or transfer function of a network can be expressed as the ratio of two polynomials Ps upon Qs. Okay, the roots of this polynomial, the numerator polynomial gives you these zeros, and that of the denominator polynomial gives you the location of poles. Okay, so this network function is of the form Ps upon Qs, where Ps is of the form, general form, a naught s to the power n plus a1 s to the power n minus 1 plus dot 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 up to an, where the coefficients are real and positive. ये important है ना, coefficient जो है सो real है और positive है. अब देखिए, if s is real, then Ps will be real. Such a function is known as a real function. ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं रियल फंक्शन. यदि Ps का सॉल्यूशन देता है जीरो के लोकेशन को, सो इफ ए जीरो ऑफ Ps इज कॉम्प्लेक्स, यदि कोई जीरो जो है कॉम्प्लेक्स है, देन इट्स कंजुगेट मस्ट ऑल्सो बी ए जीरो ऑफ Ps. अदरवाइज सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ Ps विल बी कॉम्प्लेक्स. ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए वी कंसिडर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. एज्यूम कीजिए इसके रूट्स हैं x1 और x2. वी नो दैट x1 प्लस x2 इज गिवन बाय, और दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, तो मान लो कि x1 जो है ये अल्फा प्लस जे बीटा है. सो दिस रूट इज कॉम्प्लेक्स, so the conjugate must also be a root of this equation. So this must be alpha minus j beta. ऐसा होने पर ही क्या होगा, x1 प्लस x2 जो होगा वो रियल नंबर होगा, क्योंकि माइनस जे बीटा जो है दिस विल कैंसिल विथ प्लस जे बीटा, एंड वी हैव सिंपली x1 प्लस x2 विल बी 2 अल्फा एंड दैट इज ए रियल नंबर. सो दिस इज माइनस बी अपॉन ए. तो यदि एक जीरो Ps का कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका कंजुगेट भी जीरो होना चाहिए. ठीक है, मोर ओवर नो टर्म इन द पोलिनोमियल शुड बी मिसिंग. इस पोलिनोमियल के कोई भी टर्म को मिस नहीं होना चाहिए सीरीज में से. ऐसा इसलिए क्योंकि देयर इज नो वे टू इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव साइन, एंड विदाउट नेगेटिव साइन टू कैंसिल विद द पॉजिटिव टर्म्स देयर इज नो वे for a coefficient to be zero. Thus, the polynomials in Ps and Qs must have all the coefficients real and positive except in the following two cases. तो Ps और Qs जो polynomial हैं उनमें सारे टर्म प्रेजेंट होने चाहिए. जितने भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट जो हैं सो रियल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए. इसके सिर्फ दो ही अपवाद हैं, एक्सेप्शन इसके लिए दो ही है. फर्स्ट क्या है, इफ Ps इज एन इवन पोलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स आर जीरो. ये हो सकता है कि Ps हमारा इवन पोलिनोमियल है, जिस केस में सारे ऑड टर्म्स जो होंगे उनके कोएफिशिएंट जीरो हो जाएंगे. दूसरा एक्सेप्शन तब होगा जब Ps एक इवन पोलिनोमियल हो और एक सिंपल जीरो एग्जिस्ट करता हो ओरिजिन पर. हमने देखा है कि रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पोलिनोमियल गिव्स यू द लोकेशन ऑफ जीरोज. तो Ps का एक फैक्टर s है, तो Ps इवन पोलिनोमियल है
और एक सिंपल ज़ीरो एग्जिस्ट करता है ओरिजिन पर, तो एस से यदि मल्टीप्लाई करेंगे हम इवन पॉलिनोमियल को, तो जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? वो होगा ऑड पॉलिनोमियल, implying that the coefficients of all event terms are now 0. एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन में पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्रॉस से और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सर्कल से। नाउ वी कंसिडर दी फॉलोइंग नेटवर्क फंक्शन एन एस is s into s minus 1 plus j1 into s minus 1 minus ji upon s plus 1 whole square into s plus j2 into s minus j2। अब हम देखते हैं इस फंक्शन में इक्वेशन 2 के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें वेयर इज द लोकेशन ऑफ जीरोस एंड पोल्स। तो देखिए न्यूमरेटर पॉलिनोमियल जो है इसमें ज़ीरो कहाँ कहाँ पर अकर करता है इसके हिसाब से। तो देखिए एक हमारा हो रहा है s इक्वल टू 0 पर। इफ s इज 0 then the entire numerator will be 0. So 1 0 exists at s equal to 0. So we have a 0 at s equal to 0. Another 0 appears when the second factor in numerator, that is s minus 1 plus j1 becomes 0. That is s minus 1 plus j1 is 0. That means we have a 0 at s equal to 1 minus j1. Third 0 appears when the third factor in the numerator s minus 1 minus j1 becomes 0. That is s minus 1 minus j1 is 0. So we have s equal to 1 plus j1. So these are the location of 3 zeros of the network function given by equation 2. Now let us see where the poles appear. The location of poles are given by the roots of the denominator polynomials. So we have first pole appears when s plus 1 whole square is 0. So s plus 1 whole square is 0. That means s plus 1 into s plus 1 is 0. That means s equal to minus 1 and s is also equal to minus 1. So we have a double pole at s equal to minus 1. Then we have s plus j2 becomes 0. Then we have also a pole. So this gives you s equal to minus j2. Third pole appears when s minus j2 becomes 0. So this gives you the location of another pole at s equal to j2. So this gives you the location of poles and this gives you the location of zeros. Okay? इस पोल जीरो लोकेशन को हम इस ग्राफ पर दिखा रहे हैं। We have a 0 at 1 plus j1 and also at 1 minus j1. We have a 0 at the origin here. ठीक है? We have a double pole at s equal to minus 1. We have a double pole there and we have a pole at j2 and also at minus j2. This is diagram for s plane. इधर हम खींच रहे हैं सिग्मा, इधर खींच रहे हैं जी ओमेगा. We have shown you the location of poles and zero on the complex frequency plane. Okay. Now consider the pole zero location for the standard signals. हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल है एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा नॉट टी, तो सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन 0. तो ये सिग्नल कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है. जैसे टाइम बढ़ेगा ये फंक्शन जो है सो एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा.
This has the Laplace transform 1 upon s plus sigma नॉट. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है सो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा नॉट टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस सिग्मा नॉट. ये हमने दिखाया है यहाँ पर, उसका लोकेशन बताया है आपको पोल और जीरो का. फंक्शन क्या हमारा है? एन एस इज 1 अपॉन एस प्लस सिग्मा नॉट. सो इसमें जीरो नहीं है. पोल कहाँ से मिलेगा? बाय द सॉल्यूशन ऑफ डिनोमिनेटर पोलिनोमियल. सो एस प्लस सिग्मा नॉट इज जीरो, मस्ट बी जीरो. देयरफॉर एस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा नॉट, जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है लोकेशन इसका. ठीक है. सो इट हैज अ सिंगल पोल एट एस इक्वल टू माइनस सिग्मा नॉट. कोसाइन फंक्शन जो है कॉस ओमेगा नॉट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओके. तो इसमें देखिए हमारा जीरो कहाँ पर है? एस इक्वल टू जीरो पर. दैट मीन्स दैट इज एट दी ओरिजिन. ये देखिए ओरिजिन पर एक जीरो है. ये है एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर. यदि जीरो होगा so this will give you the location of poles. So we have pole conjugate poles at s equal to plus minus j omega नॉट. तो यहाँ देखिए ये है प्लस जी ओमेगा नॉट और यहाँ है आपका माइनस जी ओमेगा नॉट. तो हमने जीरो और पोल्स के लोकेशन को इस कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन में दिखाया आपको. ठीक है. अब देखिए डैम्प्ड कोसाइन फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा नॉट टी कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देते हैं हम एस प्लस सिग्मा नॉट अपॉन एस प्लस सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. इट हैज़ अ जीरो एट एस इक्वल टू माइनस सिग्मा नॉट. ये कहाँ से आया? ये आया इसी इक्वेशन को जीरो करने से. ठीक है. एंड वी हैव ए पेयर ऑफ कंजुगेट पोल्स एट एस इक्वल टू माइनस सिग्मा नॉट प्लस माइनस जी ओमेगा नॉट. इसके सॉल्यूशन से मिल रहा है हमको लोकेशन ऑफ पोल्स. वी हैव शोन दीज इन फिगर 2. ठीक है. इस इक्वेशन के को हमने प्लॉट किया है यहाँ पर. ओके. सो फ्रॉम दिस पोल जीरो डायग्राम वी सी दैट द पोल्स करस्पॉन्डिंग टू द डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन lie on the minus sigma axis and have zero imaginary part. हम देख चुके हैं अभी. सेकेंड क्या है? द पोल्स एंड जीरोज corresponding to undamped sinusoids lie on the geometry axis and have zero real part. It therefore follows that the poles and zeros for the damped sinusoids must have real and imaginary parts and that both these parts must have non-zero value. That this is actually the case is evident from the Laplace transform of exponential minus sigma naught t cos omega t. This we have seen here. Okay. जो डैम्प्ड है अनडैम्प्ड सिनुसॉइड है सबका हमने ग्राफ देखा है फिगर 2 में. ओके. हमने देखा है कि ओरिजिन से पोल माइनस सिग्मा एक्सिस पर जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा रैपिड एक्सपोनेंशियल डीके होगा सिग्नल का. दूसरा जी ओमेगा एक्सिस पर ओरिजिन से जितनी दूरी पर जीरो और पोल्स का लोकेशन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा. ओके. सो वी नाउ कंसिडर द इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स इन द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन फॉर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स. कंसिडर कीजिए इक्वेशन 3. ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है इन आवर अर्लियर लेक्चर. सो इक्वेशन 3 कैन बी एक्सपेंडेड by partial fraction method as ns equal to k naught upon s minus p naught plus k1 upon s minus p1 plus k2 upon s minus p2 plus dot 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 kn upon s minus pn, where a pole pi is denoted as a complex number as pi equal to sigma I plus
j omega I. The inverse Laplace transform of equation 4 is given by this expression. Ft is equal to k naught exponential p naught t plus k1 exponential p1 t plus k2 exponential p2 t plus dot 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 kn exponential pn t. If you put the value of pi in this expression, we get ft equal to k naught exponential sigma naught t to exponential j omega naught t plus k1 exponential sigma 1 t into exponential j omega 1 t plus k2 exponential sigma 2 t into exponential j omega 2 t plus dot 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 kn exponential sigma nt into exponential j omega nt. This is our equation 5. So it follows from equation 5 that if the real part of a pole pi is positive, that is sigma I is greater than 0, then the corresponding term in the partial fraction, for example, ki exponential sigma it into exponential j omega it, will be exponentially increasing sinusoid as we have shown in figure 3. So this sigma I is positive. Therefore, exponential plus sigma it will go on increasing as time increases. A pole in the right half of the complex frequency plane gives rise to exponentially increasing transient response. So a system function having poles in the right half of the S-plane is unstable. Okay, this we have shown in figure 3 here. We have a pole here at this point. So this is the positive side of sigma. So we have this response. You see, the sinusoid goes on increasing as time increases. Okay. Moreover, for a system function to be stable, it should have no multiple poles on the j omega axis. For example, consider this function ns equal to s upon s square plus omega naught square whole square. Its inverse Laplace transform is given by ft equal to t upon 2 omega naught sine omega naught t. Okay, the poles and zeros of this inverse Laplace transform are shown in figure 4. This is our figure 4. Okay, so we see from here that the transient response is increasing with time and therefore the system function is not stable. Now, dividing a given function by s corresponds to integrating the inverse transform. Since division by s corresponds to a pole at the origin, it follows that a pole at the origin implies an integration in the time domain. Moreover, multiplying a given function by s corresponds to differentiating the inverse transform. Since multiplication by s corresponds to a 0 at the origin, it follows that a 0 at the origin implies differentiation in the time domain. Thus, the system function of a differentiator must have a 0 at the origin, and the system function of an integrator must have a pole at the origin. Clear? Multiple poles and zeros are permitted at other locations of the complex frequency plane, as such poles give rise to terms of the form t to the power n exponential minus sigma t, which have the required zero limit, since limit of t to the power n exponential minus sigma t as time t tends to infinity is 0 for finite n. For example, we consider the following transfer function fs equal to 1 upon s plus sigma naught to the power n. It has n poles at s equal to minus sigma naught. Okay, its inverse Laplace transform is given by t to the power n minus 1 upon factorial n exponential minus sigma t. And as t tends to infinity, this inverse Laplace transform
of Fs tends to 0. Let us now consider the driving point function of one port network at very high and at very low frequencies. At very high frequencies, the impedance of an inductor, which is equal to SL, will dominate the network impedance function in the sense that it will be very large compared to the immitance of any other element, which may be a resistor or a capacitor. If an inductor is not present, then the resistor will be the dominating element. Similarly, at very low frequencies, the impedance of the capacitor, which is equal to 1 upon SC, will dominate the network impedance function. And if it is not present, the resistor will be the dominating element. The equivalent representation of one port network at high and low frequencies will therefore involve only one kind of element, either a resistor or an inductor or a capacitor with impedance R, SL or 1 upon SC. Let us now examine equation 6, which is given here. Ns, the transfer function is the ratio of Ps upon Qs. This is A naught s to the power n plus A1 s to the power n minus 1 plus A2 s to the power n minus 2 plus so on and so forth plus an minus 1 s plus an upon b naught s to the power m plus p1 s to the power m minus 1 plus b2 s to the power m minus 2 plus bm minus 1 s plus bm. So that the above representation of one port network at very high and low frequencies hold. At high frequencies, limit of A naught s to the power n upon B naught s to the power m as s tends to infinity is equal to A naught upon B naught s to the power n minus m as s tends to infinity. Okay? In order that Ns has one of the three required forms involving s to the power 0, s or 1 upon s, it's necessary that the mod of n minus 1 is less than or equal to 1, which means that n minus m may have a value 0, 1 or minus 1 only. In other words, the degree of the numerator and the denominator polynomials for a driving point function may differ at most by 1 only. Similarly, at low frequencies as s tends to 0, the terms involving higher powers of s become negligible, such that ns is approximately given by ns is very nearly equal to an minus 1 s plus an upon bm minus 1 s plus bm. This is equation 7. Okay? Note that it is not possible for both the coefficients, either in the numerator or in the denominator, to become 0 at all time in equation 7. अगर चारों coefficient 0 हो गए तो ns will become 0. So this is not possible. So we have three different cases. The first is if ns is an impedance. What happens? I take two coefficients 0, one in the numerator and one in the denominator. So I take an minus an is equal to 0 and bm minus 1 0. Then if that is the case, then an 0, so this will be 0 here, okay, and bm minus 1 0, this will be 0 here. So what we are left with? An minus 1 s upon bm. An minus 1 and bm are coefficients, so this is simply s, that is g omega. So this represents an inductor. Clear? In the next case, I take an minus 1 0 and bm 0. So bm 0 and an minus 1 is 0. So this term is 0, and we have now an upon bm minus 1 into s. This is 1 upon g omega. So this will be a capacitor. This will represent a capacitor. Second case is ns is an admittance. We now take an 0 and bm minus 1 0. Proceeding in the same way, we find that this represents a
capacitor, while Bm0 and En minus 1 equal to 0 represents an inductor. The third case is An and Bm are 0, An minus 1 is not 0, and Bm minus 1 is not 0. Then Ns is a constant. So this represents a resistor because this is independent of frequency. We therefore conclude that the terms of lowest degree in the numerator and denominator polynomials of Ns may differ in degree by 1 at most. The necessary conditions for driving point function with common factors in Ps and Qs cancelled is summarized below. First is the coefficients in the numerator and denominator polynomials of Ns must be real and positive. Second is the poles and zeros must be conjugate, imaginary or complex. And third is the real parts of poles and zeros must be negative or zero. And if the real part is zero, then the corresponding pole or zero must be simple. Fourth, there should not be any missing term in the numerator and denominator polynomials between those of highest and the lowest degree, unless all even or all odd terms are missing. Fifth is the terms of lowest degree in the numerator and denominator polynomials of Ns may differ in degree by 1 at most. This is all about the implication of pole zero location on driving point function. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.